Good morning, everyone. My name is Itika. I am the HOD of Commerce of Dreams Coaching Institute. Today, I am going to represent the topic Sole Proprietorship of Class 11th Business Study. Sole proprietorship क्या होता है? Sole proprietorship is a business owned, managed and controlled by a single individual. कि एक सिंगल पर्सन के हाथ में क्या होता है कि हम बिजनेस को ओन करते हैं, मैनेज करते हैं और जितने भी बिजनेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो एक ही पर्सन के हाथ में होती है, तो उससे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप. मीन्स इट इज़ ओनली इन द हैंड ऑफ वन पर्सन is known as a sole proprietorship. According to the definition, J.L. Henson, sole trader is a type of business unit where one person is solely responsible for providing the capital and bearing the risk of organization. Means कि एक only one person is there जो कि जितना भी बिजनेस का रिस्क होता है, कैपिटल होता है, वो सबको मैनेज करता है और मेंटेन करता है ऑर्गेनाइजेशन को, उसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप. Now, some of the features of sole proprietorship that it is a single ownership, individual risk bearing, quick decision making, unlimited liability. First point is single ownership. The sole proprietorship firm is owned by a single individual only. All the capital is supplied by single individual from his own wealth. मीन्स कि एक सिंगल पर्सन ही होता है जिसके हाथ में सारा कैपिटल वगैरह सप्लाई होता है, तो उसे हम कहते हैं सिंगल ओनरशिप. जितने भी हमारे इंडिविजुअल के रिस्क बेरिंग होते हैं, जितने भी सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में रिस्क होते हैं, वो भी एक इंडिविजुअल ही बेयर करता है, तो उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल रिस्क बेरिंग. जितने भी डिसीजंस होते हैं बिजनेस में वो एक सिंगल पर्सन ही लेता है. ऑल द डिसीजंस आर टू बी टेकन बाय वन पर्सन ऑन द स्पॉट. तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है वो अपने डिसीजंस को क्विक लेता है विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ अदर, बिकॉज ओनली वन पर्सन मेंटेन ऑल द बिजनेस risk and decision. As a single person, it has unlimited liability. In sole proprietorship, it is responsible for all the debts of a business, like business's losses. If the business is gone on losses or profit, it is only in the hand of one person, so it maintains the unlimited liability. Unlimited liability may happen. He or she may even have to sell his personal property to pay the liability. Is also known as unlimited liability in a sole proprietorship. Now I'm going to explain you some of the advantages of sole proprietorship, that it is easy to form and dissolve. We can easy form and dissolve. मीन्स कि इसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह नहीं चाहिए इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए, बिकॉज देयर इज़ ओनली अ वन मैन इन द हैंड ऑफ वन पर्सन, सो दे डू नॉट नीड एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़. We can take a quick decisions. Has all sole trader is only a one person, so it may take a quick decision. Secrecy. A proprietor is not expected to share all the secrets from others, because all the decisions are taken by only one person, proprietor only, so it also maintain its secrecy also. Independent control. Total control of sole proprietorship lie in the hand of independent, means or it is independent control. Demerits क्या है कि limited resource in sole proprietorship firm finance supplies by proprietor himself from his wealth. The funds are not sufficient to large scale. Means कि एक small scale में ही एक business होता है, तो उनके पास इतनी ज़्यादा liability, इतनी ज़्यादा limited resources नहीं होते. So they may have only a small resources. Unlimited liability in sole proprietorship, the firm personally liable for all the debts. Thank you, students, for explaining the topic on sole proprietorship. Has Dreams Coaching Institute is the best institute for providing you all the important topics of business study. So please subscribe and share our channel. Thank you.